your performance is going to be measured by the amount of time that I will spend on the golf course. Even in ICI, उसमें तो we even talked about stuff that I can't say on air. यार मेरे बॉस को कुछ नहीं आता और सब कुछ मैं करता हूँ, सारा काम मुझसे वो कराता है. PNG is like the institution that builds you up from the ground. ये कौन है, हमें क्या सिखाएगा? Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Unboxing Success. My name is Rahil Bhatt. I'm Faria Sayed. Yasser Jalbani. And our guest today is Imran Farooqi. I'm a leadership coach. Just recently started. Great. So thank you for coming in. बहुत आपने टाइम निकाला हमारे लिए. Thank you very much. Obviously हम start करते हैं generally कि आप अपनी थोड़ी सी career के बारे में, journey के बारे में हमें बताएं, so people get to know what have you been doing and how did you end up here. Sure. Thank you for having me, first of all. So I started my career way back in 2002 when I graduated. Worked with, actually in Canada, because I graduated from there. And unfortunately, वो बड़ा गंदा time था. You probably remember the, 2002 में जो सारे tech stock crashes हुए थे and all of that. So it was a financial sector के लिए, it was a disaster, to be honest. And there were no jobs to really. So what I did was I thought, let me get into an entrepreneurship organization and get into building my own business on selling mutual funds. In Canada? In Canada. Okay. So I worked there for almost a year, did a decent job, and then, life happens. So some circumstances changed and I decided it's better to be back in Pakistan with the parents primarily. So my father was not well, so I said, chalo, let's burn some ships and come back. So I came back and as luck would have it, with the intent कि मैं Karachi में काम करूँगा and family के साथ रहूँगा and all of that. And ICI के साथ job शुरू हुई. And I remember the first day we were all sitting after the whole process. पहला दिन था, they called us in and they said, सबके tables के सामने ना name tags and एक paper उल्टा हुआ रखा हुआ था. So there were like 4 or 5 of us जिनके थोड़े से मोटे papers थे, like a stack of papers. And we were like, okay, होगा कुछ. And then, after like गलती से आ गए. Exactly, and then after a bit of like कि अच्छा सब लोग, this is what's happening, orientation type की चीज, they said you can turn over. So we turned it over and हमारे 4-5 लोगों के साथ there was a ticket to Lahore, ठीक है, for the next day, ठीक है. So they were like you should be happy the flight isn't in the evening. Okay. And we were like, okay, so what is this about? And they're like, well, you've been posted in the paints business in Lahore. I was like, acha, to What a surprise. Exactly. And वैसे तो Overwhelming. Totally overwhelming. And in a way, they had sold to us that the paints business is the most aspirational one, और जो top ranked होंगे वो ही जाएंगे, because वो सबसे ज़्यादा अहम उनका एरिया था. एक वो और दूसरा सोडा ऐश. उस वक्त भी ये मैनेजर ट्रेनी और Yes. So they used to call it a graduate recruit program, which was such a mouthful and simple, very empty program. But सही है. So it was ICI in those days, like the actual British company and the whole shebang. So उसमें managers के dining room separate होता था, staff का dining room separate होता था. सही है. It was a very different experience, right? Especially coming from Canada, जहाँ पे it was not at all, it was all egalitarian. Very colonial. Extremely colonial mindset, right? So खैर वहाँ चले गए Lahore, and then as time went on, I realized कि ये तो completely purpose को defeat कर रहा है. मैं Lahore में बैठा हुआ हूँ, family Karachi में, so it's not working out. Same Canada. हाँ, exactly. It felt exactly like that कि मैं इतनी ही दूर हूँ. Far away from. Yeah. So फिर I thought कि चलो क्या करें. So अचानक से एक दिन जो है out of the blue PNG की call आई. PNG का मैंने test दिया था for the first time in Canada. ठीक है, क्योंकि PNG being a multinational company, so उनका call आई कि जो है वो आप are you interested? तो मैंने कहा okay, क्या है position? They said finance. I said, well, I haven't really studied finance, so
but there's like, it doesn't matter. We just, you come in, we'll have a set of interviews, and we'll see if you're interested. Spoke to a mentor, and that's an important point to remember because I have always had mentors, That's great. even during university time. So I think I'm a big believer in mentorship. So anyway, so I spoke to my mentor, and he's like, देखो, PNG में अगर किसी भी फंक्शन में जॉब मिल रही है ना, तो चुप करके ले लो. तो मैंने कहा वो ऐसा time था. हाँ, exactly. सही है. I was like, but this is finance and I've never studied finance. You know, मैं तो एक economics पढ़कर आया था और थोड़ा सा एक minor किया था management में, और गलती से chemistry में किया हुआ था एक minor. जिसका फाइनेंस से कोई लेना दे. No, well, I need some credits. सही है. No, actually, because chemistry was a passion project. ठीक है, so I really wanted to do chemistry. बचपन से बहुत शौक था. I used to walk around with these little kits and, you know, stuff and like do experiments in my room. So जिससे बहुत डांट भी पड़ती थी, but you know. Wait, what kind of chemistry are we talking? So we're talking about explosive chemistry, right? So matchsticks पे foil wrap करके आप उसको heat सही करें है. और वो एक, you know, rocket की तरह निकलता है. फॉइल तक ही था ना उसमें. I'm sure your mind can wander to other stuff as well. When foil and fire That era was also very dangerous. So yeah, so chemistry मैंने somehow, because मैं चला गया था करने के लिए, and I realized very quickly into it कि it's not my cup of tea and I want to do economics, so I moved into economics and management. But because मैंने आधे ज़्यादा courses कर लिए थे, तो I was like, चलो एक आधा और करके minor तो पकड़ लें. So that's what I did. But anyway, so when I came back, and ICI, so PNG ने कहा कि भाई आप आ जाएं and interview तो दें. So I came in, I had an interview, वो panel interview था, बिल्कुल, you know, 3 लोगों एक साथ, and you know, all of that, quite intimidating. And Much like this. no, significantly different. What do you remember of that interview? कोई एक चीज. So it was, I think the most important thing that I remember, and like not important, but like the thing that, you know, stuck with me was the formality of that interview. ठीक है? So 2 people in suits and 1 lady in a, you know, formal wo. And that was 2000? This is 2003 ka bilkul end. So December 2003, right? And they were, you know, very, very serious. So no smiles. And, you know, I was not used to this kind. Like even McGill में भी जब हमारे साथ वो होते थे, you know, mock interviews, career fair वगैरह के अंदर, तो like the person in the front was like, They you know, make you feel comfortable. exactly, you know, all of that. And all interviews had always been, even in ICI, उसमें तो we even talked about stuff that I can't say on air. They got to know you really, really well. ICI was a complete, you know, vice presidents or like Asif Juma type के लोग, you know, बैठे हुए, and like, you know, and you're like talking to them about all kinds of shenanigans that you pulled in your university days, right? And they were laughing and talking, we've been there, done that type की बातें. But this was like, you know, by the book, very like, you know, tuck kind of thing. And मैं काफी obviously थोड़ा सा intimidated था. You were saying something. No. I can tell. Questions like going in my mind. So anyway, वो interview हुआ and everything, and then उसके बाद फिर जो है वो I went back, and then they, you know, I was in Lahore, and they actively, I think PNG ने सबसे ज़्यादा actively recruit किया था मुझको, because one of the person who eventually I started reporting to in PNG, उन्होंने, he flew in for a conference. So PNG का recruitment वो होता था LUMS में, drive. So recruitment drive. So I remember he called me to LUMS. First time going to LUMS, and I was like, अच्छा ठीक है. Pepsi dining center उनका एक होता था. I don't know if you guys are aware of that. So there was this thing. So, you know, वहाँ पे बैठ के, after his recruitment whole thing, you know, we sat down, and he was like, yeah, देखो, you know, ICI is a sinking ship, and you should think about this. You know, there's so many rumors and so many things in the market that it's about to go down, and you know, ये वो, मैंने कहा, okay. नहीं selling करनी पड़ी थी इसको, मतलब. बहुत ज़्यादा ना, काफ़ी selling हुई थी, and to be honest, I was like, okay, this is scary, but अच्छा ठीक है, and then you know, mentor ने बोला है तो. हाँ, but mentor ने बोला था तो मैं तो decide तो कर लिया था, ठीक है, so ये ऐसी कोर्ट हो रहा था for no reason, right? You're had like they known, high value prospect.
So I was like, chalo, let me feel important. What an ego trip है ना. So anyways, so उन्होंने recruit कर लिया मुझे eventually, and I decided ठीक है, I'll move back. So I moved back and I started in, ironically, hair care. So I lost my hair back in 2000. Right. Okay. So still I started with hair care, financial analysis, right, in P&G. So I spent about in all in P&G I spent about 11 years. ठीक है, various 11 years, and let me think, 1 2 2014. yeah, 2014. And let me think कि मैंने assignments कितने किए in these 11 years. So there was financial analysis, hair care, then there was product supply, financial analysis, then there was distributor के साथ काम, then there was a assignment in Dubai, and then वो beauty financial analysis था, then came back. So about 5-6 assignments, you know. So P&G अच्छी बात ये होती है कि P&G ना, another one of my mentors used to say कि P&G is like, you know, it's like जैसे Citibank को कहते हैं ना, the bank of all banks, right? So P&G is like the institution that builds you up from the ground, because in those days there was no, you could only get into P&G from an entry level position. ठीक है, so unless के आपने entry level पे join in नहीं किया, so you can't, there's no lateral hiring. So कभी ये नहीं होता कि somebody from, you know, outside will be, होता था at least, from outside will be coming in and placed on top of you, right, on your But I think that's still true to a great. not anymore. So P&G has introduced lateral hiring, I think 2-3 years ago, 3-4 years अच्छा. ago. So globally, so we global stance change किया था उन्होंने. But they did so in those days it was just entry level. So it was considered के, you know, or Pakistan में तो it was a top choice के, you know, everybody was like, you know, I कि हमें remember, जाना है. you know, like IBA और lungs में जो वो एक हफ्ता होता था ना, you know, everybody's like, okay, we're going crazy. Unilever is there, and P&G is there, and you know that was the week that made, or you know, it was make or break for your entire life. Of course. और वो mass testing होती थी. I don't know if you guys, if you've been through that. वो पूरा एक hall book होता था जिसमें like 200 बंदे बेचारे जो हैं वो बच्चे सारे टेस्ट देते थे, ठीक है, and it was yeah. अभी भी अब तो मैनेजर ट्रेनी प्रोग्राम्स और ये सब हर कंपनी ने अलग अलग कर दिया, लाइक यूनिलीवर, पीएनजी, फ्लिप मॉरिस और भी कंपनीज So P&G still does not do an MT program. What P&G did at that time as well, and अभी भी करते ऐसे ही हैं, is recruit through internships. So what they do is कि they during their school का जो trip होता है, you know, which Faria remembers, वो जो है उसमें जो है वो they would choose, you know, the people that they want, and वो उसमें वो interviews में they go through a regular, जैसे मैं जिस process से गुजरा था exactly same process है interviewees भी, as in interns भी गुजरते थे, right, completely same. And then there would be a, I think 8 weeks or so की internship जिसमें उनको projects मिलते थे, जो real life projects होते थे. I remember हम लोग बनाते थे ऐसे कि जो हमारे अपने work plan के अंदर होते थे, and we didn't have the time to do it, or our priorities were different, and we were like यार करना तो है but अभी time नहीं है, ठीक है, तो वो पकड़ाते थे, right? So we would, so that's how it would work. So there were real life projects. It was not like photocopy कर दो और, you know, इस तरह की चीजें. अच्छा, मैं थोड़ा time warp में जा रही हूँ, but now in retrospect, do you think that's a good way to hire people? Absolutely. Yeah. I think absolutely, because I think Metro exactly does the same as well. Although Metro goes through a management trainee program, और उनका जो है वो about 18 months long होता है, approximately a year to 18 months long. लेकिन P&G का was 8 to 10 weeks, depending on के if there's somebody who has more time can, in those days, तो even up to 12 weeks लोग करते थे internships. But वो because उनको, so in Metro the difference is simple, that in Metro you don't have one project, right? You have like a few projects, and you're going through a rotational exercise. So you go to the store, you would go to the, you know, all the different functions, like finance or ye wo, everything, right? So you go through like a whole experience. In P&G on the other hand, it was like जिस function के अंदर आपने internship चूज की है और जिसमें आप जाना चाहते हैं,
उसी फंक्शन के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, और वो एक या दो प्रोजेक्ट्स मिलते थे, नो मोर देन दैट टिपिकली, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट? Sometimes, like, just to be mean, we would give more projects and see कि वो कोप कैसे करते हैं ना, अच्छे ज़्यादा स्मार्ट जिनको आपको लगता था कि यार ये इसमें पोटेंशियल है, तो we would, like, I remember there was this girl, उसको हमने दिए थे कोई 5 projects in 8 weeks to complete, and she did them, right? So she was a star. वो eventually CFO भी बन गई PNG की, पाकिस्तान की, so she was a star. So yeah, so there are, there were such heroes there as well. I mean, there was another one in HR who's now in Singapore, right? So a lot of different people, went through those journeys. So PNG 360 आप घूमे, फिर उसके बाद All finance, every single, you can say, finance discipline. And then, so some personal milestones happened during that time. My father passed away when I moved to Dubai. So that kind of, although you recognize कि ये stupid sort of thinking है, लेकिन somehow आपके दिल में चीजें बैठ जाती हैं, right? So उसके बाद से my decisions have been very parent focused. So अब अम्मी रह गई थी, so मैंने क्या किया कि then जब मैं PNG से वापस आया, like दुबई से वापस आया to Pakistan, so I was like okay, एक ही assignment था पाकिस्तान में, because I had reached that senior level के इसके बाद मुझे या तो मैं CFO बन के वापस आऊँ, और लेकिन before I can be a CFO I need 2 more assignments outside various places, right? So an international assignment was you can say, an eventuality, right? वो अब करना है, right? There's no other option after those 3 years in Pakistan. So eventually I bit the bullet and I said, चलो ठीक है, मैं accept करता हूँ, and I accepted an assignment in Saudi. So Saudi has 2 plants, PNG के. One is in Dammam, the other is in Jeddah. Multi-category plants, Pampers, Ariel, hair care, सारी चीजें बनाते हैं. And PNG, same. PNG, yeah, right? So they're joint venture, and so I had taken that assignment and I was recruiting, building my team के मुझे कौन within the pool of Arabian Peninsula and Pakistan के जो finance के लोग थे, I was picking and choosing कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, इस तरह की मैं अपनी wish list बना रहा था full, ठीक है? And then again, you don't know कि plan actually क्या होता है. And I got a call out of the blue from this recruiter, and she's like, I've got a CFO position, are you interested? I said, नाम बताएं पहले कंपनी का, उसके बाद बात करेंगे. And she was like, it's L'Oreal. पहले तो she went around saying कि नहीं मैं नहीं बता रही, ये वो, but वो playing hard to get, but you stick to it and you say नहीं बताएं, वरना we're not having anything, any discussion further. And I think at that time, after like maybe 13 years of experience, so you've earned that place to say कि कि I'm not budging unless I'm the one controlling this discussion, right? So and you're calling me, so yeah, absolutely right. So then she eventually caved and told me it's L'Oreal, and I said, "ठीक है, that sounds interesting." So again, the next call went out to my mother, mentor. Oh, I was like, no. अम्मी से ये बातें नहीं कर सकते, अम्मी से ये बातें नहीं कर सकते. नहीं, I was still in Pakistan. To know who's the mentor in the end. अम्मी से ये बातें नहीं होती हैं at all. Even today, no. This is, it's a different relationship वो. But this is more like, अम्मी से हाँ ये जरूर होता है कि दुआ कर लें, ये करने जा रहा हूँ, प्लीज इसकी दुआ कर लें कि ये सक्सेसफुल हो जाए. That's the best thing. Exactly. So I was still in Pakistan at that time. I was still negotiating यहीं से बैठ के कि जो है ना मुझे क्या चाहिए वहाँ पे. Team wise, right? Zabardast. So what a power position. Yeah. अच्छा वहाँ पे मुझे ये चाहिए, ये सही नहीं है, इसको हटा दो. मैं नहीं जा रहा, नहीं दे रहे तो. Absolutely, literally ऐसे conversations होती थी कि नहीं ये वाला जो ये भी आ रहा होगा यार, इसको ले लो यार, ये बहुत बेहतर है. Absolutely, like one of the people I was replacing, ठीक है, क्योंकि वो what PNG was doing was कि वो दो plant finance manager roles को merge करके एक बना रहे थे, right? So it was going to be a really senior position and shuttling between Dammam and Jeddah constantly, right? So उसके अंदर I was like really trying to be the boss कि भाई मैं अगर चाहिए तो इतना मैं sacrifice करूँगा आपके लिए, to give me what I want. So I was literally doing what you just said कि ये नहीं चाहिए मुझे, जिसकी reputation बहुत बुरी है, but ये दे दें. So anyway, so जो call आई जब, तो I was like ठीक है, spoke to my mentor and he said कि look, why don't you try it? Interview देने में क्या हर्ज है? So I went and
इंटरव्यू दिया जाके, पहले मैंने कहा लॉरियल जा रहा हूँ, माय मेंटर सेड कि देखो लॉरियल जा रहे हो, ये एक ब्यूटी इंडस्ट्री है, थोड़ा तमीज से जाना, तो पहले हम चलते हैं इस्माइल फरीद, ठीक है। थोड़ा सा So for the first time in my life, I went to a designer for a suit, ठीक है, and एक जैकेट और एक सूट बनवाया, ठीक है, और वो मैं पहन के चला गया इंटरव्यू के अंदर, and the interview was in those days L'Oreal के ऑफिसेस जो थे वो फोरम में होते थे. अभी भी है? No. अब चेंज हो गया? अभी रिसेंटली तो था वहीं. I'll tell you कब चेंज हुए और क्यों चेंज हुए और कैसे चेंज हुए. So yeah, so you know, I think the recruitment process of L'Oreal that I remember the most about was that it was the fastest recruitment I have ever experienced. I think from the call from the recruiter till me sitting in my own office for the first time ever in my life, because P&G is an open plan office and this was L'Oreal was like directors get their place, right? So I think it hardly was like 14 days. ठीक है, and P&G में था कि when you resign, if you go into competition, no notice period, bye bye, you know. Competitor. Same उसी evening में bye bye, ठीक है. So anyway, so we started L'Oreal. L'Oreal के अंदर I think L'Oreal में मैं 4 years गुजारे, and what I think मेरे लिए 2-3 चीज़ें सबसे important थी L'Oreal के journey में. One was कि I learned really how to delegate effectively. ठीक है, पहले से करता आ रहा था, but यहाँ पे आके you know building up a team and importance of how individuals contribute and उनकी exposure, उनका career manage करना as a leader, setting that vision, that was really something that I learned there. Working with the person that you named was an amazing experience. I think by far one of the most I've learned from any boss in my career. ठीक है. So yeah, so L'Oreal में मैं सिर्फ ये कहता था लोगों को, just to go back to what we were talking about earlier, कि I used to say to them कि your time, your performance is going to be measured by the amount of time that I will spend on the golf course. ठीक है. So if I play 18 holes twice a week, ठीक है, that's bad because वो तो मैं weekend पे कर लूँगा, right? But if I am able to play 9 holes like 3 or 4 times in a week, that means that you're doing your job well because I have the free time to handle that, right? So that, yeah, so वो होता था, but not really. That is how you you But tell my them team used to say things like कि जो है वो हमारे घर जाने का टाइम होता है बॉस बज के 5 मिनट, बॉस बज के 5 मिनट, इसलिए कि हमारे भी इंटरेस्ट इसमें अलाइंड है, तो आप जल्दी से जाएं ताकि हम भी घर जाएं. I remember मैं किसी I went with my sales guy एक जगह पे, तो बड़ी कंपनी थी, तो उनके सीईओ बैठे हुए थे, बातें हो रही थी, तो आई थिंक फॉर 45 मिनट्स वी जस्ट टॉक्ड अबाउट गोल्फ. ठीक है, तो जब हम वापस आए, बोला सर ये कोई काम नहीं करते क्या, ये तो गोल्फ, हर चीज सिर्फ गोल्फ के बारे में बात की. मैंने कहा भाई उनका काम ही गोल्फ खेलना है, तो बात बस नहीं समझ रहे. मुझे अंदाजा है जिनके साथ आपने काम किया है, तो जो आवर्स किससे है ना उनके साथ क्या क्या है, क्योंकि मैं भी 1-1.5 साल लगा चुका हूँ उनके साथ. sure. तो वो जो 9, 10, 11, 12 बिल्कुल, but no, बहुत मेलो हो चुके थे उस वक्त तक. अच्छा. So things had changed significantly, but that's okay, you know, and that's part of the you know the reward as well, right? Detail, yeah, and so important also to get into those details because you know, as I said, that's how you learn also, and the devil is in the details, right? So जब तक आप घुसेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि what's going on. So then you ended up कितना साल काम किया, and then so 4 years and 4 years किया, and you know offers आती रहती थी various, लेकिन all of them were in finance because of the finance 15 years of finance, right? So and I was like, you know, कि कितना different होगा किसी और जगह पे CFO होना. At the end of the day, and not to put CFOs down, but at the end of the day, it's about, you know, regularly closing your month, forecasting, building, coming up with investments and things. So you knew what exactly. First time to move forward. एक time आया जहाँ पे, you know, आप office की बात करी थी, so एक time आया जहाँ पे like I had so much time on my hands कि मैंने कहा मैं office का project ले लेता हूँ. So I moved the office from the Forum to Dolmen, ठीक है, and that was a lot of fun. That was a great experience. मैं 2 शिफ्टें रन करता था, सुबह ऑफिस और फिर 5-5:30 बजे at the site, right, till like 11, and completely suit के अंदर dust covered, like, you know, everything, but you know that was part of the fun, right? So the office हमने खोला, उसकी branding थी बड़ी ज़बरदस्त, you know, it was a great, beautiful office. If you ever get the chance to go, I will really recommend. Although post-COVID they've halved it as well because
जरूरत नहीं पड़ी थी because a lot of people have moved work from Yeah, home. I've been to the office. It's really cool. Yeah, We so- did some renovations recently. Right. वो जो ऊपर वाला फ्लोर था जो हाँ. ऑफ कर दिया उन्होंने, Right, वो right, मजे का है. So yeah, so then I was looking for something different कि अब क्या करना चाहिए, and Paris की एक conversation शुरू हुई for me to be moved abroad, but the same nagging self doubt and कि मैं शायद एक गलत decision ले लूँगा अम्मी को अकेले छोड़ के, क्योंकि अम्मी got diagnosed with dementia, so we weren't allowed to move her, and the doctor said that you can't, you have to make sure that she's there's a routine that is followed, all of those things. And familiarity जो already इतने सालों से है, you don't want to change that. Yeah. So I took a personal decision and I said, okay, let me look for other opportunities as well. And interestingly, Metro came along with a very, very unique opportunity, जो कि I don't think कि आसानी से मिलती है इस तरह की. It's a rare find. It was a strategy-driven role. It was called value creation, but it was a role in which the person would report into the global Dusseldorf-based operating board of the company. That was Right. German, I think. German. So Metro is a German wholesale company, and Pakistan में उनकी wholly owned subsidiary है. So I thought this was quite an interesting opportunity, and I कहने को तो I jumped at it, but that jump took about 7 months to complete. Okay, because one of the longest, right after L'Oreal's experience, this was the longest recruitment process I have ever been through. Okay, the conversation started in April, and I got the offer in November. Okay, so that is how slow their process was, and it was not because of anything, other than the fact that German efficiency इतनी amazing है कि उसमें people's calendars used to be booked 4 months out. So to get the operating board में से किसी बंदे का time for an interview or an assessment to take place, it took us like 6 months. हाँ 4-5 months. मेरे सितंबर में जाके assessment हुआ, सितंबर में assessment हुआ, फिर अक्टूबर में offer आई, and like November में I joined them. This is 2018 now. Like 7 months process. Yeah, exactly. So it was a good experience though, like because अब नई चीज सीखते हैं कि ये भी इस तरह patience किस तरह आप करें इसके अंदर exhibit. बीच में लटके हुए हैं, यहाँ भी नहीं जा सकते, किसको क्या बोले. Exactly. ठीक है, and L'Oreal had a 3-month notice period, right? So I eventually, once the assessment center cleared me, so I had to resign as well, because otherwise तो ये never ending वो हो जाता है ना story. ठीक है, so anyway, so ये और वहां से निकलना भी जरा मुश्किल होता है, मैंने तो यही सुना है. So was there a time where you were just लोग sort of... जाने में जो अच्छी पोजीशंस में वो तो टाइम लेते हैं. So was there a time between where you were just not working? Yeah, you can say that. So what did you do? So that's where I started the thinking on the leadership for development wali side. I thought ke I had a great experience. P&G maybe you would be taught to build the people below you, right? Because if you don't make yourself redundant, you can't ask for a new assignment or a promotion. So you have to, the first question आप जाके पूछें अपने मैनेजर कि भाई मुझे मूव कर दें, उनका जवाब होगा तो तुम्हारी जगह पे कौन आएगा? Who is it going to be? And you had to give him like 2-3 options, otherwise it's not going to happen, right? So it was the same thing. So you had to build people up. So in order for that to happen, you learned a great deal about how to build people up, right? And उनको किस तरह आप train करें and coach करें into leadership positions. So that's how it happened कि वो कर लिया. फिर मैंने I had this thought कि कुछ करते हैं. Spoke to a few people, and I mean, you had 4 months off and you started this life-changing venture that was the passion of your life. Absolutely. So I thought, I spoke to a few people. They said, "Okay, look, you can start off a Karlo, lekin get into a coaching program." Where is the mentor now? So mentor has been throughout. Every And you're the stage, mentor yourself now. every stage, the mentor was there. Mentors मेट्रो के से बारे भी में पहले बीच में रह गया ना, मैंने कहा मेंटोर कहाँ गया? So mentor, जब वो कॉल आई थी ना मेट्रो की, तो मैंने mentor को फोन किया, and he's like, hey, don't tell me it's another CFO role. I was like, no, it's not. He's like, हाँ फिर कर लो. मैंने कहा कंपनी को सुन ले, कुछ तो सुन ले.
he's like, अच्छा tell me. So फिर I spoke to him, you know, I told him the whole thing, and he's like, ठीक है, yeah, sounds like a good idea. बार-बार कॉल करा, हाँ यार कर लो यार, जो भी है कर लो, मुझे ना बताओ. इतना बड़ा हो गया है. अभी भी पूछता है. Exactly. तो फिर मेट्रो में कैसा एक्सपीरियंस रहा? So metro was an incredible experience. हाइलाइट्स क्या थी मेट्रो? So first 2 years में इतनी ज़्यादा travel थी कि मैं Emirates पे, Turkish पे और कतर पे gold member था. ठीक है. So I would be in Karachi for like maybe 3 or 4 days in a month. And I traveled a lot. I learned a lot about how retail and wholesale operations are run. Globally. ठीक है, across the world. So Metro is present in like 28 countries. Not anymore actually. I think 22, 23 countries now. They've pulled out a few countries. But it's absolutely an incredible place to be. ठीक है, so globally तो Metro की बहुत अच्छी standing है. And then so 2 years. पाकिस्तान में अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है Metro is क्या अब तो local हो गया ना? It's localized. No, it's entirely wholly owned subsidiary. So Metro जब पाकिस्तान आया था ना, so उस वक्त जो है वो there were two separate companies, Metro and Macro. So Macro came in with an arrangement with a local company, and Metro came in as a wholly owned subsidiary. And they changed the name after. So globally they merged eventually. So Metro and Macro globally merged. So when they merged, so then they gave options to every country कि आप choose कर लें कि which one do you want to be, Metro or Macro. So Pakistan had more presence of Metro stores. So converting a Macro store into a Metro store or vice versa. And how many is a tough metros one. like were in Pakistan? So Metro में at that time I think 9 stores थे. Then they went 10 थे. Then they went to 9 because वो सदर में जो था, you probably know Karachi वाला, that one closed down for some issues, political related problems. And then they opened one more in Multan about I think 2 years ago or 3 years ago I think. Because so that was the 10th store की presence in Pakistan. So Metro was a huge learning ground. काफी अच्छा वो था. And then फिर कैसे डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया काम करना? Yeah, so after 2 years in Metro, they offered another position which was franchise की business का head. So franchise was a program that Metro had launched in 2017. They were struggling a little bit. वो stability के साथ launch नहीं हो पा रहा था because of पाकिस्तान के dynamics बहुत different हैं from other countries, right? Tax के मसले, ये वो बहुत सारे issues. So there were the global program had to be tweaked, for Pakistan. Yeah, for Pakistan, right? That's so like always. So multiple tweakings had to happen, right? So क्योंकि पहले बहुत सारे different चीजें try की कि investor को ले आके वो कर ले, खोल ले अपनी दुकान, but उसका वो experience नहीं होता था. They would not be able to manage inventory. हमारे अपने कुछ और भी groups इसमें add हुए थे, right? कोई और भी investment के लिए within Metro? नहीं. So Metro का real estate is owned by a joint venture company, but Metro operations are Metro, right? So there's a. तो फिर किस तरह से आपने उसे localize किया? So what we did was कि because we were struggling के then we realized कि हमें ना local partners के साथ काम करना पड़ेगा. So we came up with an idea of working with a corporate player. ठीक है, and we went into a partnership with a corporate company जिसके multiple retail stores already थे, retail shops already थी, but they were not grocery retail. ठीक है, they were food retail but not grocery retail, right? And frozen primarily. ठीक है, so frozen items. So हमने उनके साथ partnership की. We did it was an amazing partnership for like about 2 years or so. अच्छी expansion भी हुई, everything happened. बहुत सारे issues होते हैं market के अंदर, bad debt related और ये सब चीज़ें. Which is life in Pakistan, unfortunately. That's why most multinationals, in fact all multinationals जो FMCG world में काम करती हैं, they don't work with direct sales, right? They don't have their own sales. They have distributors to have that buffer for cash collection and recovery. So it's a similar kind of process that we went in. And then we came up with a hub and spoke model. So हमने एक we tested out these largish shops, like about you can say like 3-4 हजार square feet की दुकानें खोली हमने, जिसमें हमने warehouse भी लगा दिया. So it became like a hub for delivery to a smaller franchise outlet.
So the small franchise outlet would be like about this size, about 300 to 500 So square you feet. involve traders basically. Yes. And which So- cities were these So this is specifically? within Punjab, across Punjab tha, and it was central Punjab. So we were covering around 30 plus cities in Punjab, ठीक है. And the idea was to go outside Lahore because वहाँ पे ज़्यादा demand है, right? So competition of modern retail Lahore में, Islamabad में, Karachi में, यहाँ पे बहुत है. But जो places like Sahiwal, places like Chichawatni, This places is something like I'm always curious so about. they are incredible in terms of purchasing power, but not having enough opportunities, right? So we convinced management, and in fact जब वो visit किए तो हम तो चूंकि बहुत ज़्यादा जा चुके थे अच्छी तरह से in Punjab. I think I've done from Karachi to Multan, Multan to Lahore, and Lahore to Pindi some 15-16 times by road. ठीक है. So on the GT road and वो सारी चीज़, so just see के where are the opportunities, and we would go like literally 70 kilometers by 70 kilometers. So 70 kilometers के बाद हम रुकते थे and we would identify a shop. Operations. हाँ, right. to see कि यार यहाँ पे एक दुकान की opportunity कितनी है, एक है कि दो है कि चार हैं, we don't know कि एक छोटा टाउन है उसमें कितनी opportunity हो सकती है. Because the concept was a neighborhood store, right? So we did, ये सारा कुछ किया. So it was quite a learning experience for me again, because something that I had never done. So these were all, general management positions, right? So isme, I think for me, for my growth, what was the biggest difference was that having spent 15 years in finance and then 5 years in general management really taught me a great deal about overall resource management, whether it's human, whether it's money, whether it's, financial resource, jo bhi hai, capex, all of those things, so you understand a lot more. Plus operations are bahut seekhte hain, theek hai, because Metro has a very, very strong expert, team जो कि operations handle करती है. I mean, Metro से अच्छा operational excellence from a retail standpoint and a wholesale standpoint, like I cannot imagine anybody. Maybe Walmart और का जो Sam's Club है वो शायद यही करीब आ मैं जाए. पूछने वाली थी क्योंकि in terms of retail, this is the biggest issue क्योंकि so many stores open of this scale और फिर वो बंद हो जाते हैं because they cannot manage operations and logistics. So how does it stand apart? So it stands apart from based on discipline. So it's literally like a military style discipline. So you're taught कि ये अगर aisle आपका है, so इसके अंदर ये merchandising होनी है, ये planogramming होनी है, and ये इससे इधर नहीं हो सकती, ठीक है? And the checks on you are so strong that you can't falter, ठीक है? So and I'm sure you have done it. I have done it many times. जब आप as a consumer आप shopping करने जाते हैं तो आपने एक सॉस उठाया किसी एक आयल से, आपने कहा यार अच्छा है, ठीक है, रख लेते हैं और आगे चले जाएं, चावल के आयल में आके आपने सोचा कि नहीं यार ये वाला नहीं चाहिए मुझे, मैं शायद नैंडोस का ही ले लेता. वो ये होता है कि आप बास्केट ले जा रहे हो तो बोलते हो यार नहीं ये निकालना है, अच्छा मैं उधर थोड़ी जाऊंगा, क्या दूर यहीं रख दूंगा. Exactly. So तो वहां चलेगा. That cleaning up, that is such a big job, right? So constantly, because it has to look good. So if it doesn't look good, when you walk into that store after Faria has gone into that store, what would you feel like? यार ये तो मतलब जो head and shoulders के पास जो है वो एक रूह अफ़ज़ा की बोतल क्यों रखी हुई है, मतलब what is this about, right? So it gives you a यानी अब मैं एक काम करूँगा, Unilever की चीज उठा के PNG पे रखूँगा, PNG करें जाके आओ. Let's play that game next time. और रात को देखेंगे जाके क्या हो रहा है. ये तो फिर भी वो है कि at least it's all food. When you discover in जहाँ पे माइक्रोवेव्स और टोस्टर ओवन जो चीजें रखी हुई है ना, वहाँ पे जब आपको कोई चावल की थैली मिलती है, ठीक है, and you're like अच्छा अब मुझे ये यहाँ से लेके I have to go all the way across to that end of the store, right? And Metro stores are huge, right? So you have to really, यही मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप बास्केट होती है तो आप सोचते हो यार, अगर आप वैसे भी सोच रहे होते हो कि मैं रख देता हूँ जगह पे, तो आप बोलते हो यार नहीं इतना दूर मैं नहीं जा रहा, यहीं रखूंगा मैं. So after being in Metro, मेरा at least ये खत्म हो गया है. So I am like नहीं, मैं वापस जाके रखूंगा यार, वो बेचारा बच्चा फ्लोर इंचार्ज बहुत जाती है. अच्छा ये मर्चेंडाइजिंग ब्रांड्स ने भी तो ले ली अब.
हमेशा से थी, हाँ, तो वो तो बहुत वो हमेशा से खुद थी। अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो मर्चेंडाइज करते हैं, जो भी एब्सोल्युटली, प्लानोग्राम एब्सोल्युटली। होता है, इन तो एवरी स्टोर, उसमें आप लोगों को हेल्प नहीं हो जाती उसमें काफी? so it's a two-way, thing. It's a double-edged sword, let's say. क्योंकि If they don't do it, then what? not only, but sometimes they encroach upon other things as well, right? उनको लगता है कि भाई हम आपको बताते हैं, ठीक है? And metro is very much like कि नहीं, हमें wholesale ना सिखाएं, ठीक है? हम we can हमें पता handle this better, ठीक है? So ये होता है, but then there are some जो कि वाकई amazing होते हैं, and they take over the entire aisle as well, right? They say कि यार आप you don't have to worry, like मैं अपनी brand के साथ साथ I can also look after सही बात। this cleanliness over here, so it's a big so ये एक बहुत बड़ा obviously it's a benefit as well. जब आप aisle में जाते हैं तो एक aisle में एक brand नहीं होती, right? Under the category of let's say shampoo, तो उसके अंदर जो है वो Head and Shoulders भी होगा, Pantene भी होगा, but उसके अंदर Lifebuoy, Sunsilk, Tresemme, everything is going to be there, right? ये तो सिर्फ ये वाली brands हैं, like Unilever and P&G की, but 10 other local brands भी हैं, right? Bio Amla और ये और वो जो आपको चाहिए वहाँ. So in order for जब एक retail उसके अंदर और large scale wholesale format के अंदर जब वो planogramming बनती है, तो वो planogramming is not only for that brand. एक आधा aisle तो आपको अगर किसी बड़ी brand ने ले लिया तो ले लिया, लेकिन when it's a multi-brand aisle, so then what are you going to do? So you have to make those planogramming. ठीक है, वो सारे आप प्लानोग्राम्स बनाएंगे एंड यू हैंड देम ओवर टू द स्टोर के अंदर जो एसोसिएट है जिसका काम है. अब उसका काम ये है कि बिकॉज दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट्स सो मिलिटरीली रन, डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है कि वो उसको ही हैज़ टू लुक और शी हैज़ टू लुक एट दैट डॉक्यूमेंट and make sure that it looks exactly like that. उस पे I don't know if you ever Google planogram, आपको पता चलेगा उसमें पूरी उसकी बॉटल का साइज होता है, शेप होता है, एवरीथिंग ब्रांड पूरी एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो इट टेल्स यू कि ओके इतनी फेसिंग्स होंगी, इतने ऊपर ये वाला आएगा, उसके नीचे ये वाला आएगा, प्राइसिंग इस तरह मूव करती है. देयर इज एन एंटायर साइंस बिहाइंड इट. लाइक यू गो फ्रॉम हाई प्राइस टू लो प्राइस, यू गो फ्रॉम स्मॉल वॉल्यूम टू लार्ज वॉल्यूम, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू गो फ्रॉम ए ब्रांड्स टू लेस, वो बेस्ड ऑन द वे द शॉपर इज वॉकिंग. सो और आप फिर बता रहे थे कि छोटे स्टोर्स जीटीज जो हैं, जनरल स्टोर्स जो हैं, वो उनके पास ये ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल होती है बिकॉज चॉइस कम है ना चीज़ों की, राइट? सो इन अ टू गिव यू एन एग्जांपल, इन अ लार्ज शॉप, ठीक है, लाइक अ लार्ज स्टोर लाइक अ मेट्रो और अ कारफूर और ये वो इम्तियाज फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनके अंदर लाख लाख एसक्यूज होते हैं, राइट? आर्टिकल्स आर मोर देन 100,000, राइट? बट इन एंड चलें एक्टिव होंगे 25-30 हज़ार, बट स्टिल 25-30 हज़ार इज अ लार्ज नंबर, राइट? हम जब फ्रेंचाइज चलाते थे तो वी यूज्ड टू गो विद लाइक 1,500 to 2,000 आर्टिकल्स, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम मंथली ग्रोसरी के लिए केटर नहीं कर रहे, हम डेली टॉप अप्स के लिए केटर कर रहे हैं. सो जो डेली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, इसका सो यू स्टार्ट विद के व्हाट इज द शॉपर कमिंग इन फॉर, ठीक है? तो डेस्टिनेशन का रीजन क्या है? सो व्हाई आर दे कमिंग टू योर स्टोर? सो इफ दे कमिंग टू द स्टोर फॉर अ डेली ग्रोसरी शॉप, सो यू cater for it accordingly. ठीक है? If they're coming in for a monthly grocery shop, then you have to plan accordingly, right? So and ये सारी extensions shop से shift. That's why metro में एक अलग-अलग section मुझे याद है कि वो trade slabs बने हुए. Yes, exactly. ठीक है? And इसी से ये चीज़ extend होती है into online as well. It's a so there's a lot of thinking and knowledge that goes into this. So ये सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ सीख लिया आपने, फिर how did you, what was that moment जब आपने कहा switch करना है, अब this is enough, मैंने बहुत काम कर लिया है? So in 2022, I finally got certified as a master level coach. So I did. So parallel ये भी. Yeah. So ये दिमाग में था कि कुछ तो करना है, right? So it's a passion, right? So when you've got that passion, so another one of my mentors used to say to me कि जो है वो job, वो काम जो आप करना चाहते हैं और उसमें पैसे बने, तो फिर why else would you do something else? जिसका मेरा जवाब था, मुझे कोई गोल्फ खेलने के लिए पैसे दे दे. राइट? ठीक है, और उसके लिए you have to be really good. Unfortunately, I'm not there. ठीक है, so next best thing was कि चलो मैं कोचिंग करता हूँ. ठीक है, मेंटरिंग एंड कोचिंग वाली साइड पे एंड लीडरशिप डेवलपमेंट पे. So in 2000 August and July and August में I got level 1, level 2, so master level certification कर ली. And then I thought कि अब कुछ करना है.
So I had a conversation with the powers that be in Metro, and I said, "Ke bhai, I want to move on," and they were very supportive. And That was 2000. this is 2023, early 2023. And then we came up with a glide path, okay, how we will had an exit strategy or Yevo. And, it happened. Were they your first customers too? No, so my niche is different. So when I came in, one of the things that I had always wanted to do was ke, I feel ke multinationals there is a lot of this focus on building people up, right? Because I'm a product of that institution, you can say, right? Whether it's P&G, L'Oreal, ICI, Metro, right? There's a lot of focus on it. Like L'Oreal we were sent to INSEAD, right? INSEAD for for a master's in business excellence, paid by the company, right? We were sent Metro ke andar, there was an 18-month program on leadership skills ki development, right? There's a lot of That's stuff that happens, investment, right? actually, Exactly. yeah. P&G में आपको साल में 2 से 3 trainings आपकी होती थी international, right? Where you were exposed to other cultures, other companies, and बहुत ज़्यादा. So ये आपके अंदर होता ही है. Multinational really build this. So I felt कि taking that idea, that mindset, that ethos, that philosophy, and bring it to Pakistan, ठीक है? And work with local companies. So my niche is local companies. I don't want to work with multinationals. I've stated it very clearly with me and my partners, ठीक है? And I've decided that we will focus with small to medium-sized local companies. So even the large companies, we're not approaching them primarily because we feel that after a while, जो लोग in crème de la crème के part होते हैं, वो जब छोड़ के आते हैं उन multinationals को, they usually get hired for the local corporates, right? The large local corporates. So वहीं से pick करते हैं. You can call it poaching or whatever, ठीक है? But the reality is that. So वहाँ भी वही mindset बैठा है in the large local corporates. So in the large local corporates, I still felt that it doesn't make that much sense. So that's why my focus has been on small to medium-sized companies or startups, okay, and help them figure out how to run their business more efficiently. So it's still corporate Pakistan. I'm still totally, connected with the corporate world. And this is the future. अब यही companies हैं जो कि आगे जाके Exactly. और And, इनको and they're underserved. Absolutely. And सबसे बड़ी, you can say the opportunity, ठीक है, from a commercial point of view as well as from a growth point of view, इन्हीं के पास है, right? Companies who have been in Pakistan and operating for like 50 years are still working with people who have immense technical skills, right? There are brilliant people working there, but they lack the leadership and management, polishing, you can say, or, that oomph or the push to get to that level कि जहाँ पे they can take over those बहुत companies. सारा ये भी होता है कि आपने इतने साल गुजार लिए होते हैं and then company has to bring in a new person because exactly. उनको नहीं train कर रहा है या उनको uplift नहीं कर रहा, उनको भी ये लगता है यार इनसे नहीं होगा, किसी और को लेकर, बजाय कि आप अपने लोगों पे invest करें, उनमें से you choose people and you see their potential और उनमें से आप किसी को आगे लेकर जाएं. So अब उसमें ना, so now पहले तो as a when you're an employee, ठीक है, so the company is like, अच्छा फायर भी करना होगा, अगर गलती करेंगे आप तो जो है उसमें टाइम लगता है, राइट? P&G में वी वाज फेमस कि जो आपको 2-3 साल तो आप निकाल ही लगते हैं बैड परफॉर्मर भी है तो, राइट? स्पेशली इफ यू आर एट अ रिलेटिवली ईमेल खेलते हैं. एग्जैक्टली, राइट? सो ये तो आप कर सकते हैं, राइट? अभी सो जाता हूँ यार 2 साल but like, or आप रेटिंग आपकी 1 साल अच्छी आ गई तो you can ride that wave for like a year or so, right? But अगले साल खराब आई तो आप कहेंगे अच्छा अब तो वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान तो आएगा पहले, before anything else can happen, right? उसमें भी 6 महीने मिनिमम तो मिलेंगे, right? But in this case, like, that you are, you have to put your money where your mouth is, right? You have to be there, right? So, and we're not like the typical consultancy where we don't go in and we say कि आप ये कर लें or thank you and here's my bill, right? So we say we will guide you and we'll help you, coach you along the way so that, वो teach a man to fish वाली बात जो है ना. So we say कि rather than कि हम आपके लिए करें, हम आपकी टीम को साथ चलाएंगे. तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफिकल्टी होती है because you're going in for the first time, you don't know these people, they don't know you. You have to earn your position of, you can say, of some kind of authority where they're respecting you and they're saying कि ठीक है ये जो बात कह रहे हैं हम सुन लेते हैं, शायद इसमें कोई दम. I find that
there's a lot of cynicism that comes with coaching or leadership. Absolutely. Have you found this is- Absolutely. Like, ये कौन है, हमें क्या सिखाएगा? ये बच्चे आगे से हम 40 साल से यही काम कर रहे हैं. Absolutely, right? Absolutely. But surprisingly, I have not faced that even once. Oh, really? ठीक है? And I'm really pleasantly surprised by this, even where, people have been in the business for, like donkey's years, like, 50, 60 years से वो काम कर रहे हैं. And that's the reason, because you're coming up with the background, strong background. Maybe कि that's the आपने जो reason. काम किए हुए हैं हर जगह Maybe पे. that's the reason, but I think a bigger reason is that the newer generation of owners they have a lot more exposure. Yeah. ठीक है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है ना कि आपके पास मैनेजमेंट की चीजें इतनी ज्यादा हैं कि you cannot escape it. अगर आपकी LinkedIn पे एक प्रोफाइल है ना, तो और आप वो एक दफा दिन में खोलते हैं या हफ्ते में 2 दफा भी खोलते हैं, तो the amount of content that hits you in terms of management skills, in terms of leadership skills, and the importance of that. Always people are, what are they doing? They're selling, right? So everybody is on it saying कि जो है वो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, right? So there's a lot of it right outside, right? So उसकी वजह से people have really, the new generation of, you can call them sates or the owners or, whatever you want to call them, they're very different. They want change. They want to bring up their people. Every single one I've spoken to talks about investment in their people, right? और ये पहले नहीं होता था, right? Because Yeah, पहले I had the same experience even because we are a design firm. तो जितने भी सेडिया कंपनी थी, जब उनके बच्चे, उन्होंने कहा हमें अच्छा ऑफिस चाहिए भाई. हम क्योंकि अब वो अमेरिका से पढ़ के आ गए, वो कनाडा चले गए, उन्होंने एक्सपोजर ले लिया. अब जैसे मुझे कोई बताता है, मैं एक जापानीज कंपनी में गया, तो वो उसने जो है ना कह रहे मेरे साथ चलता हुआ जा रहा था और एकदम से एक बंदे को डांटता है. और फिर मैं ऑफिस में गया, मैंने कहा तुमने उसको क्यों डांटा? तो कह रहा है उसने स्टेपलर देखा नहीं, गलत जगह रखा हुआ था. उसने कहा स्टेपलर का, कहता है वो देखो मार्किंग बनी हुई है, स्टेपलर यहाँ रखना है. कहता है क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है कि पिछले पूरे साल में पता नहीं कितने 22 घंटे ज़ाया हुए हैं सारों के स्टेपलर ढूंढने में, जब आप क्योंकि बहुत सारी पंचिंग होती थी. तो उसने बोला अच्छा, फिर एवरीथिंग वाज पेपरलेस, प्रिंटिंग जो है वो हो ही नहीं रही है डायरेक्ट. तो वो बहुत सारी चीजें, तो उसने कहा यार ये सब इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, मगर उसके लिए मुझे इन्वायरमेंट देना है पहले लोगों को. Absolutely. दे तो अच्छे ऑफिसेस बनाना, Exactly. गाइडेंस देना, लोगों को ट्रेन करना. Exactly. एंड देन वो लेगेसी एम्प्लॉइज थे, अभी से Yes. अब्बा के जमाने के थे, दे कांट चेंज देम, सो दे वांट एन एक्सटर्नल टीम ऑफ फोर्स दैट कैन कम इन and do the smoothing out. Yes. Yeah. इवन सिर्फ एजाइल वर्किंग स्टाइल को बनाने के लिए भी एक टाइम लगा है, अब जाके वो इस चीज पे आए. वरना जो पहले ऑफिस की बात करो, एक हर कोई डब्बे में क्यूबिकल में बैठा हुआ. I remember लाइक when नाउ I इट्स टाइम फॉर एजाइल वर्किंग. बल्कि काफी टाइम हो गया, अब तो पुराना हो गया. उसमें कितनी जल्दी जल्दी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. I जो remember when आपका I was ऑफिस at Jio. स्ट्रक्चर है वो Yeah. मैटर करता है इस चीज पे. I remember when I was at Jio, तो the old जंग अखबार people, उनका इतना एक गंदा सा ऑफिस होता था, 10 लोग एक कमरे में बैठे होते थे. And then the new Jio office that they made was so nice and shiny, and that old team was angry. They were like, we've been working here for 40 years and they have us here like cockroaches in a matchbox, and you guys are working. But obviously the new employers, the new state wanted his team to be motivated और ये and care about जनरेशन, working. या द न्यू जनरेशन आल्सो, जो जेनजी, और वो उन लोगों को एनवायरनमेंट चाहिए. Exactly. So you वरना have to वो change. हमें नॉलेज चाहिए थी बहुत ज्यादा. उस वक्त यूट्यूब नहीं था, या वो टाइम आ रहा था यूट्यूब अब नॉलेज हर जगह है, अब एनवायरनमेंट चाहिए. Absolutely, absolutely. And आप जो कह रहे हैं कि agile working, so अब तो बहुत evolve हो गया है कि it has to be not only agile and it has to be not only cubicles, right? Separate वो company, दोनों का एक mix create करें आप, because क्योंकि distractions भी बहुत होती हैं, कॉफी ब्रेक्स बड़े लंबे हो जाते हैं, ठीक है, जब आप खोले बैठे होते हैं. हाँ, बट ये कि आप इंटरेक्ट बड़ा क्विक करते हो. वहां से आपने बोला उसको कि यार ये मुझे यार अब भेज दो. ये अब तो पोस्ट कोविड ने जो हमें जितना सिखाया वो तो है खैर कि एक अलग ही वर्चुअली level पे आप दुनिया में हर जगह काम कर सकते हैं, राइट? सो वी इवन ऑफर वर्चुअल कोचिंग सेशंस एज वेल, राइट? सो जो है वी कैन डू एनीथिंग एनीवेयर इन दैट वे. सो ये बहुत, इट्स अ बिग चेंज दैट यू हैव टू एक्सेप्टेंस आ गई उससे. So tell us about the company that you have and how does it work? How can people reach you? किस तरह से, how does it work? Like ऐसे आपने कहा कि एक तो है कि मैंने एक क्वेश्चन सेशन कर दिया, एक ये कि you tag along for the journey. Yes. What is that? So we have 4 verticals, right? So we have 4 verticals. The company is called the Blue Company, ठीक है? Because the idea is to have wide open spaces, open skies. So
completely open thinking, right? So that's the idea. And we have 4 verticals. The first one is called Deep Blue, which is about going into one-on-one coaching. So it's executive coaching, mid-level, mid to senior level logon ki bhi, and going in depth and understanding ke how can we help and how can we resolve. Usually the mantra behind coaching is ke it's a self learning thing. So you have to go through a journey of self discovery. Solutions आपके पास होते हैं. You just need a coach to help you find them. Okay, so that's what I've been trained as. So we do that. We go through. So this is one of our verticals where we do one. Again, how long is the? So it depends. We typically suggest to have at least 8 sessions because that is 6 to 8 sessions. Okay, because that is and about an hour long each session. Okay, so and we try to say, okay, don't do it every week. Do it like take some advice or take some guidance, uncover what you have, a solution for yourself, go implement it, understand कि उससे क्या impact होता है, come back and let's discuss So how typically to change it. quarterly, a quarter, 6 months. Once every fortnight minimum, or you can go up to once a month wale sessions as well. So it's like that. ठीक है. So that's our Deep Blue, जो एक vertical है. The other vertical is it's called Blue Skies. That's our workshops. Specific 1 to 2 day trainings or workshops on concepts. So things like goal setting. Why is that important? Okay? How do you set actionable goals? Okay? Then stuff like, for example, time. बहुत से लोग कहते हैं you must have heard, आप कोई चीज़ नहीं हो या नहीं कर पा रहे होते हैं तो सबसे पहली एक्सक्यूज जो आती है वो आती है टाइम नहीं था. In my book, this is the laziest one, right? So my mentor, going back to the original mentor, once he was like, this is way back, like maybe 6-7 years ago, right? मैं L'Oreal में होता था, and he was like कि तुम सुबह हम golf का एक round खेलते हैं, and I was like नहीं, मैं नहीं कर सकता, and he's like क्या मतलब, I was like, I don't have the time, and he's like, wait, do you control your time or just time control you? That question really flipped everything in my mind, and I was like, yaar, this is so important, right? So you need to know where is your control on time and how to exercise that control. So 2 variants के बारे में बात कर ली. Let's move on to the third variant. So the third variant is it's called Blueprint. Okay? And this is the one that's about our coaching for businesses. So we work on whether it's an organization key development, whether it is restructuring your organization, whether it is coming up with organize करना. Team. So people development. So we come up with plans on how do we build solutions for them. So बहुत सी most companies जो होती हैं ना पाकिस्तान में जो state और local companies हैं, and also companies who are startups, they struggle with systems. So they don't have systems, and I'm not talking about like digital IT systems. I'm talking about systems and processes, right, to run a business, an operation. So we come in and we identify where are your gaps, and then we get you to develop those systems and those processes. We don't do it for you. We guide you. We help you. Bilkul, absolutely. As we were talking about offline के चैट जीपीटी आजकल कितना वो है. So technically अगर आप चैट जीपीटी को पोस्ट करें कि यार मुझे एक I don't know स्टॉक मूवमेंट का प्रोसेस बता दो, तो वो ट्र करके आपको बता देगा. बट क्या वो प्रोसेस जो है आपकी कंपनी पे अप्लाई करता है कि नहीं, राइट? सो वी go in, we help them to document what's happening today. Then we help them find how can they do better of that particular process. And then we help them write that process for them. Okay? So we don't write it, they write it. So उससे क्या फायदा होता है कि they now know कि processes बनाते कैसे हैं. Okay, and how to build it. So because this is the strength for multinationals, right? Having systems in place. Like PNG में हर चीज का वो होता था process, right? Even के air conditioner जो है वो कितना
वो चलेगा, किस टेम्परेचर पे चलेगा, वो भी ग्लोबली डिक्टेट सारे होता था, SOPs बने राइट? हुए हर थे, चीज की हाँ SOP होती डेटा है, हमारे राइट? यहाँ तो हम ये इसकी है ही नहीं ना कि डेटा होना चाहिए, डेटा ही नहीं होता। और डेटा अगर है भी, वो जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको देखना कैसे है, कितनी मल्टीपल तरीके से इस डेटा को देखा जा Absolutely, सकता है, we और don't really know. उन कंपनीज में जो आप बात कर रहे हैं अक्सर दफा तो मतलब ये तो बहुत हम डिटेल बात कर रहे हैं, वरना जॉब डिस्क्रिप्शंस भी डिफाइंड नहीं होती नहीं सही होती, से, होती नहीं है, हाँ, हायरार्कीज नहीं डिफाइन हुई हुई होती, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम्स नहीं होते, a lot of it और ये used to be, बेसिक्स हैं बिल्कुल। हाँ, and a lot of it used to be on whim, right? हाँ इवन लोगों का भी वही बात है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक दफ़ा हम प्रमोशंस कर रहे थे, तो एक बंदा आया, उसका मुंह जरा बना हुआ था, मैंने कहा यार तुम्हारी अच्छी तो सैलरी बढ़ गई, वो कहता सर सैलरी तो बढ़ गई है सर, वो मेरी डेजिग्नेशन। मैंने कहा तूने क्या CEO बनना है? मैंने कहा तो आजा मेरी जगह बैठ जाओ, CEO बनना है, खुश हो जाएगा तो CEO बना देता हूँ मुझे। तो मगर वही बात है कि यू नो एज ऑब्वियसली अगर मल्टीनेशनल में होता तो मे बी वो एक सिस्टम के थ्रू आ रहा तो वो ही वुड नेवर फील दैट वे, यू नो ही वुड गो थ्रू अ सिस्टम, उसको पता होता है यार इतने पॉइंट्स, इतनी चीजें मैंने की हैं, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे आता है, तो आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट टू हिम। मैं तो उसकी मतलब थोड़ी बदतमीजी कर दी, मैंने कहा भाई तुम क्या, मैंने कहा आज लिखवा देता हूँ, तुम बैठ जाओ, मुझे इससे अच्छी चीज नहीं होगी कि कोई ये काम करेगा मैं कुछ और काम करूंगा जाके। बट वही बात है कि वो टू हैव द नॉलेज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि सबके वो डिससेटिस्फैक्शन बहुत इसकी वजह से है कि लोगों को लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग, बट वो वही बात है कि भाग कहाँ रहे हैं और भागना कहाँ है, स्ट्रक्चर कहाँ है, क्या वो लैडर क्या है, वो ग्रोथ हाउ डू यू ट्रैजेक्टरी मूव क्या है। अहेड, ठीक है? फिर देन आल्सो स्टफ लाइक कि भाई आपको जज कैसे करेंगे, राइट? जो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, राइट? कि भाई हाउ व्हाट आर दोस KPIs दैट यू विल बी मेजर्ड अगेंस्ट योर सक्सेस, योर परफॉर्मेंस, ठीक है? देन स्टफ लाइक कि अच्छा मैं आज इस पोजीशन पे हूँ तो मैं उस पोजीशन पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है? देन स्टफ लाइक के आर देयर दीज पोजीशंस, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप 6 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो क्लियर हायरार्की, बिकॉज सब जो हैं वो और सबको अपनी तनख्वाहें पता है एक दूसरे की, एवरीथिंग, ठीक है? जो कि PNG, लॉरियल, इन तरह की जगहों पे दिस वाज अनहर्ड ऑफ, राइट? दिस इज सपोज्ड टू बी लाइक द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सही बात है, ऑफ ऑल that's a पीसेस crime, ऑफ, like, एग्जैक्टली, टू शेयर दिस स्टफ, राइट? सो फाइनेंस वाले की नौकरी चली जाए। और क्या? मतलब ये बहुत बुरी बात होती है। एग्जैक्टली, राइट? वो एक ऐसी बात कर रहे थे, किसी का रिश्ता आया ना, तो वो अब दोस्त था कहीं मल्टीनेशनल में, बता रहा था सीन, तो कहने लगा यार वो उसका फोन आया, बोलने लगा यार वो इसका रिश्ता आया हुआ है, वो लड़की थी, एक दोस्त थी, तो पता करके बताओ। उसने सही बताई, उसने कहा यार मैं कैसे बता सकता हूँ ये कोई मैं सेठिया कंपनी में थोड़ी बैठा हूँ, Exactly. उसका एक वो है, लेकिन उसने Of बता course. दिया। पता सबको ही होता है। हाँ, तो वो दोस्ती यारी में उसने कहा यार इतना सीरियस, ने कहा भैया मेरी शादी का सवाल है, मुझे बताओ लड़का सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो वो उसने कहा बताना नहीं किसी को, ये बताया। हाँ, तो उसने कहा सही बताया, चाहिए, तो शादी भी हो गई। वेरी नाइस। तो फिर बाद में जब हम सब बैठे तो ये बात ये भी निकली ट्रस्ट बिल्डिंग है ना। Okay, the last variant. So the last variant is something that we haven't launched yet. So it's in the works. This is more about it's going to be launched around in the next few weeks, hopefully, right after Ramzan, inshallah. This is more about a longer program. So it's a 6-month type की engagement that we want to bring in, and we want to do 1 day a month, जिसमें we truly groom and polish and develop leaders. ठीक है? From all the way from how to set goals, how to set visions, how to drive them from a purpose or an objective, and then bring that down. फिर teams को किस तरह lead करना चाहिए, communication skills, and conversation. So I think PNG ने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त सिखाई होती है, और PNG अपने leaders पे बहुत focus करता है इसके ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि it's one of the most important things to do is the art of conversation. ठीक है? Like we're having a conversation today, right? And understanding कि आपको किस तरीके से, किस tone में, कहाँ पे stress करना है, कहाँ पे नहीं करना, किस level पे किस तरह की conversation करनी है, right? Hierarchies जो होती हैं in an organization, you will talk to a CEO in a different way versus talking to your subordinate or your immediate leadership team. And you'll talk to, as a CEO, you will talk to your leadership team in a different way, and you'll talk to people who are like 4 levels junior to you in a different way, right? Because वहाँ पे आपको inspirational होना है, यहाँ पे आप challenge accept कर सकते हैं. You have to be more open in a leadership team setting so that you allow other voices to be heard,
right? Or in fact, the other voices to come out, because ऐसे CEOs भी होते हैं ना जो कि कह देते हैं कि भाई my way or the highway, ठीक है? So you don't have the room, ठीक है? And I've been very lucky to have worked with, all my career कि कोई एक भी ऐसा मेरा CEO boss नहीं गुजरा, including the person you were thinking of, who has not given me the room to voice what I want to say with, absolutely no, you can say कि, fear कि इसकी कोई रेप्रेसल होगी या इसका किस तरीके से मुझे जो है ना बाद में नीडल किया जाऊंगा. नीडल बहुत फन जो होते थे वो करते भी थे कि हाँ भाई ये आए कुछ बताने के लिए ठीक है, लेकिन जो है वो बट इट वाज ऑलवेज टेकन इन द राइट स्पिरिट, राइट? सो व्हेन यू सी एनवायरनमेंट्स जहाँ पे आपको इनकरेज करते हैं ये कॉन्वर्सेशंस, सो आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू बिल्ड दैट स्किल, ठीक है? सो द आइडिया इज कि हम over a period of 6 months, 8 months, whatever, we build people's skills in that. We get them into forming good habits, do some journaling, do some thinking, do some meditation, do some reflection, ठीक है? जो कि generally in our culture, it's seen as a weakness, right? कि जो एक मर्द है वो उसको सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, राइट? वो बस सब कुछ जो है ना वो लाइक माचो मैन वाली जो चीज़ है ना. सो यू नीड टू बी मोर इंट्रोस्पेक्टिव, यू नीड टू, in order for you to be a better leader, you really need to think through कि आपका impact, आपकी जो मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ है वो उसकी consequence क्या है. I mean, look at unfortunately our leaders in the political sphere. other sphere, ठीक है, जहाँ पे, और not even political sphere, even the the powers that be wala sphere, ठीक है. I think that when we think manager, leader, we think of someone who's authoritative, Yeah. who has a singular Absolutely. voice and it's my way Absolutely. and that's it. Absolutely. जबकि इतनी amazing concepts होती हैं, like there's this concept called adaptive leadership, ठीक है, जो कि आपको बताती है कि according to a situation, you have to be a servant leader, a director, because कहीं पे you have to play that role, right? You have to pull rank at times and you have to say कि नहीं, ठीक है मैंने सबकी बातें सुन ली, but ये होगा, ठीक है, because this is what has to happen because of these reasons. और कभी-कभी you have to be like कि हाँ यार, you're right. I didn't consider this aspect, and I'm willing to take that feedback and say कि ठीक है, let's modify the solution to include what you've said. Or even let's do this next time. Exactly. So you feel heard कि यार चलो मेरी बात सुन ली गई है. This could also be the way. Absolutely. So, and then there is one more aspect to this which I'm not going to talk about. Okay. So you have to wait for that to happen. We'll wait for the surprise. That's a teaser. No, but interesting है बहुत, and I'm sure. अच्छा एक और भी ये, क्योंकि जब हम obviously हम बात भी कर रहे थे कि when before you came, तो वही था कि यार इतने अभी हर बंदा कोई 2 साल का एक्सपीरियंस अभी होता नहीं है, वो यूनिवर्सिटी से निकलता है, एक मल्टीनेशनल में काम करता है, उसके बाद वो जो है ना स्पीकर बना हुआ है और वो मेंटोर बना हुआ है, और वो जा के लोगों को वही बुकिश सारी वो बातें जो एक टिपिकल इंसान को सुनने में आती हैं वो आप कर रहे हो. And you're not like, I've been to a couple of them and मैंने कहा यार ये क्या बता रहे हो तुम मुझे? You have no life experience, you have nothing to share, you don't have any examples that you can give because you haven't been through them. और इवन आप उस पर भी सुनते हो, जो इंटरनेट पे भी आप देखते हो, तो बहुत सारों को आप फिल्टर आउट इसलिए कर देते हो कि वो कहता है जी मैं इस जगह का पढ़ के आया हूँ, ये किया वो किया, एक बिजनेस नहीं ओन किया और बिजनेस एडवाइस दे रहा है, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ उसके ऊपर? बट पीपल आर मेकिंग मिंटिंग बल्कि मनी ऑफ इट, के जस्ट बिकॉज दे आर मे बी गुड स्पीकर्स, दे हैव एक पर्सोना है. Not only that, I think के the average person who's in corporate Pakistan or any organization for that matter, whether it's a development sector या जहाँ भी है, ठीक है, the average person there is so starved for this knowledge, ठीक है, that they are willing to take anything, right? And they're willing to listen to anybody who makes even a little bit of sense, right? So there is a huge dearth of this, and I think कि यही सबसे बड़ा unfortunate बात है कि जो है वो हमारे पास हमारे लोग इतने अच्छे हैं, and they are so smart and everything. They need grooming, they need polishing, they need some advice on how to I'll tell you selling, ठीक है, what's coming in this is कि we feel कि it's not just about conversations, it's not just about communication skills and leadership skills, it's also about how you appear to somebody, right? So from personal hygiene to how to dress to all of these things, they matter, right?
So when I That's told the you first about impact. when I told you about कि मैं Ismail Fareed गया था for my L'Oreal interview, right? And my mentor was like, you have to listen, you know, I mean, तुम जिस तरह से PNG में jeans और shirt पहन के चले जाते हो, ये नहीं work करेगा, right? But you know, But and it made an impact. but अब तो environment change हो गया. But then again, it's not कि आप वो जरूरी है कि आप सूट पहन के ही जाएं. But then again, बिल्कुल. you dress up for the you know for the it occasion. depends, yeah, depends where you're going. आप groomed रहें, चीजें करें. Absolutely, and basic बातें हैं ना, like I mean, आपने you know, simple things के you know, body odor, right? You know, बहुत और छोटी हमें छोटी लगता है कि चीजें ये शायद सबको पता होगी, नहीं मगर नहीं होती पता, एंड लोगों को अंदाजा नहीं होता कि इससे इम्पैक्ट कितना नेगेटिव जाता है, राइट? और अब एंड ऑल्सो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है अगर आप थोड़ा सा किसी के साथ तैयार होके चले जाएं. पीपल थिंक यार यू पुट इन एन एफर्ट, राइट? पीपल फील लाइक यार अच्छा इसने वैल्यू दी है, यू नो. एंड all studies, all you know things, you know, मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि यार इट्स बेटर टू बी ओवरड्रेस्ड देन अंडरड्रेस्ड. इवन आप बैंक चले जाएं तो हाँ, आपको एक Yes. डिफरेंट Absolutely. ट्रीटमेंट मिलती है. You know, I remember कि there was मैं L'Oreal में CFO था, ठीक है? So I will not name any names, ठीक है, in this, including the name of the institution that came to visit me. So there was this bank जिसका मुझे L'Oreal के हेड ऑफिस से जो ट्रेजरी के हेड थे, ठीक है, उनकी मुझे कॉल आई कि you have to meet this person. This is a global relationship. And I was like, but they don't really have a presence in Pakistan. Why am I wasting my time to meet them? He's like, look, this is my direction. You have to do it. Pulled rank on me, right? ठीक है, totally pulled rank on me. And I was like, sir, बिल्कुल, let's do it. और मैंने मीटिंग सेट की, एंड यू नो, अब आपको पता है आप L'Oreal से आ रहे हैं, आपकी ग्लोबल रिलेशनशिप है, यू हैव मेट, यू प्रोबेबली नो पीपल, यू नो, आपके हेड्स जो हैं जो दूसरे ममालिक में बैठे हैं वो L'Oreal के को जानते हैं. This guy walks in with his shirt open till here, ठीक है, chains in, ठीक है, and completely, you know, looking like कि ये तो हाँ. And I was like कि ये he was the CEO of that bank, right? And I was like, this is the, you know, meeting that I'm supposed to have. So थोड़ा सा homework करके चले जाएं, basic homework कर लें यार कि, you know, मैं भी कभी जिंदगी में L'Oreal में पहले नहीं गया था, but you know, the mentor advised me कि, you know, you need to be up, you know, when we would go to Paris for our meetings, वहाँ पे, like, people used to be dressed to the hilt, right? And आप जितने भी 3-piece suit में चले जाएं, you would feel like, you know, कि okay, I am nowhere near this. But nobody is saying कि आप उस level पे जाएं, right? But एक basic तमीज़ होती है, right? I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो अरमानी का सूट पहन कर आए, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है? But the fact is कि आप कम से कम एक, you know, बटन तो बंद कर लें, ठीक है, टाई ना लगाएं, it's okay, मगर at least, you know, look more professional, you know. So basic grooming, I think is missing in our. And I think और वो internally, like अगर if you remember, so we used to do a show, ठीक है, एक time पे, और उसमें we had a female co-host, और उसका यही मसला था, ठीक है, बॉडी ओडर का एक मसला था. एंड अब ऑब्वियसली हम दो लड़के कैसे उसको ये समझाएं कि भाई तुम, तो हमने फिर प्लान किया, फिर हमने अपनी प्रोड्यूसर थी, वो भी हमारी लड़की थी, तो हमने उसको बोला कि यार हम ना इसको गिफ्ट दे देते हैं ना, जस्ट टू यू नो कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो ये वो. एंड वी गिव हर दैट, मगर वो अगले दिन वो भी लगा के नहीं आया. हमने कहा यार इसको कैसे वो लगा के नहीं आई और वो बहुत नाराज हो गई. अच्छा तो पता भी चल गया, अब जब पता चल गया तो मैं तो एटलीस्ट लगा तो लेती. So I mean, it's a difficult thing to communicate. It's a very difficult. It's a very difficult one to have with a colleague or with a reportee or something. You know, I've had reportees who had, you know, breath issues, right? So, भाई आप, you know, बहुत सारी चीजें होती हैं. There are ways आप पानी ज़्यादा पिएंगे ना, even so that itself neutralizes a lot of issues इस तरह के, right? So the point is that there are tips and tricks and things that you know that you can impart to people. Which will help them. क्योंकि बहुत बड़ा talented बंदा होता है, but because of a small thing like this, exactly, people start avoiding them. वो उसको socially जो है ना एकदम से isolate कर देते हैं, and they don't even know why that is happening. Absolutely, that's the bigger problem. Absolutely. और वो question कर रहा होता है कि यार मेरी हर चीज सही है, growth क्यों नहीं आती, right? So you know so that's the idea. So the fourth one is about this, but this will be launched in a bit because I think Ramzan भी आ रहे हैं बीच में, so we don't want to, you know, start off with रमजान में कहता है हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी, यू नो, प्रोडक्टिविटी बस रह completely productivity sleeping.
अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, आपका एक अगर बेसिक कूजे में बंद किया जाए तो व्हाट इज दैट वन लाइनर ऑफ हाउ व्हाट इज अ गुड लीडर इन योर हेड? I think it's all about building people up. So, in my opinion, you have to value your team. You have to make sure that you give the right attention to them. Okay, whether it is in their development, whether it is in stark feedback. Okay, and even if it means that you're asking somebody to leave the organization that you're working with, you're doing them a favor by doing that. Because if you're giving them a fool's paradise, और आप उनको ये लगता रहे कि यार मैं सही है चल रहा है ये वो, ठीक है, that's not going to help them in the long run, right? Eventually आप मूव करेंगे या कोई और मूव करेगा, उसके साथ ज्यादती होगी इवेंचुअली, राइट? सो माइट एज वेल आप उसको सही टाइम पे बता दें कि यार ये आप इम्प्रूव करें तो आप आगे जा सकते हैं. अगर आप ये नहीं करेंगे then you have to look for other opportunities. Maybe this is not the right fit for you, right? So this kind of discussion, it's a difficult discussion to have, but you have to always think that you're doing this for their benefit, right? And ये reality भी है, because अगर आपने नहीं किया तो वो पछताएंगे, आप भी पछताएंगे, वो भी पछताएगा, राइट? आई मीन आप खुद ही इवेंचुअली कर रहे होंगे कि अच्छा आपने उसको रख दिया है एक चलें आपने उसकी पेरोल कॉस्ट भी हैंडल कर लिया, ठीक है, बट देन उसके एस्पिरेशंस, उसकी ग्रोथ, उसका वेयर हाउ आर यू गोइंग टू ड्राइव दैट, एंड आर यू बीइंग फेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? यू आर नॉट, राइट? व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग, राइट? सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम ऑन पीपल. एट द एंड ऑफ द डे काम जो है ना वो लोग करते हैं, ठीक है, एंड दैट्स द रियलिटी, ठीक है. सो कहीं पे भी चाहे वो कल्चर सेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे जो भी हो रहा है, ठीक है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द पर्सन, द पीपल इन योर टीम हु आर ड्राइविंग रिजल्ट्स. आई मीन सो मेनी स्टडीज दैट एक्चुअली मिडिल मैनेजमेंट जो होती है ना कंपनीज को, वो ही रन करती है, ठीक है, कोई टॉप मैनेजमेंट कंपनीज को रन नहीं करती. टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टू मेक रिलेशनशिप्स, टू बिल्ड development, right? To develop people, develop businesses, right? That's the idea. So New opportunities. yeah. So in my experience and my you can say opinion as well, कि journey जो होती है ना of a leader, like आप जब career से start करते हैं अपने एक at a entry level kind of a thing, and then you start to grow, what you realize is कि disproportionately शुरू में ना आपका time जो है वो business की thinking और business की building में जाता है, ठीक है, एंड आहिस्ता यानी कि आप एक्चुअली काम कर रहे होते हैं कि ओके ये प्रोसेस चलाना है, ये ऑपरेशंस करनी है, ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, एंड ऑल ऑफ दैट. बट एज टाइम गोज ऑन एंड एज यू गेन एक्सपीरियंस एंड यू ग्रो इनटू योर करियर एंड योर बिजनेस, यू रियलाइज कि यू नीड पीपल अराउंड यू, एंड व्हेन यू नीड दोज पीपल अराउंड यू, एक्चुअली व्हाई डू यू नीड देम? बिकॉज आपका टाइम ज़्यादा जो है ना वो उनकी डेवलपमेंट और उसके ऊपर काम शुरू होता है, बिकॉज अदरवाइज आप लेगेसी नहीं छोड़ पाते, वरना वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप काम में हैं, वो आपके साथ मर जाएगी, right? ग्रो नहीं करेगी, वो ग्रो नहीं करेगी. सो इफ यू वांट टू लीव समथिंग बिहाइंड, और इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग दैट हैज सम प्रेजेंस, ठीक है, सम वैल्यू, उसके लिए आपको टीम चाहिए. और अगर आपको टीम है आपके पास, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने उसको ग्रूम नहीं किया, उसको बिल्ड नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो यू कांट. अच्छा, एक बड़ा एक परसेप्शन है हमेशा, और जनरली हम जितने भी लोगों से मिलते हैं जो एक मिड ईयर लोअर टीयर में काम कर रहे होते हैं, यार मेरे बॉस को कुछ नहीं आता और सब कुछ मैं करता हूँ, सारा काम मुझसे वो कराता है, और वो तो खुद तो घूमता रहता है, आशी करता रहता है, मजे में बैठा रहता है, पूरा दिन टाइम जाया करता है. ये क्या है माइंडसेट, एंड इज इट द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, या हाउ शुड एन एम्प्लॉय थिंक अबाउट देयर बॉस? क्या ऐसा हो रहा? तो मैंने कहा भाई कोई तो रीजन होगा, वो तुम्हारे ऊपर बैठा है, वो क्या है? तो हाउ डू यू आंसर दिस दिल की क्वेश्चन? आवाज है यार. Clearly, है ना? This is a great question actually, and honestly, I think कि ये होता है कई situations में, reality भी, ठीक है. So barring those situations जहाँ पे reality है, at the end of the day, look, as I said, कि the large chunk of the work that happens in any organization happens by the middle management, ठीक है. जो लीडर होता है ना, जो बॉस होता है, जो ऊपर बैठा होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो अपनी टीम को सही तरीके से गाइड करे, वो अपनी टीम के साथ टाइम स्पेंड करे इन हेल्पिंग रिमूविंग रोड ब्लॉक्स, ठीक है. वो अपनी टीम को कन्वे करे कि हाउ डू व्हाट दे डू, हाउ डज दैट रिलेट टू द विजन ऑफ द कंपनी एंड हिज विजन और हर विजन, राइट? इट्स सो इम्पॉर्टेंट दीज थिंग्स. एंड देन द अदर वन, जो कि बहुत दफ़ा लोगों को लगता है कि ये अय्याशी कर रहे हैं,
एक बहुत टिपिकल वो है कि ये जो एज यू सेड अय्याशी कर रहा है और गोल्फ खेल रहा है सारा दिन, ठीक है, सो उसका क्या काम है? वो बेसिकली बिजनेस डेवलप कर रहा है, राइट? सो इफ यू आर लाइक आई नो people who have built massive businesses from golf networking के through, right? From joining all of these organizations जो आपने देखी हैं कितनी छोटी छोटी Rotary clubs से start हुए थे, हैं. exactly, and they have presence of so many people, like CXO groups होते हैं, there are EO, YPO, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, right? जो global organizations भी हैं, उनके पाकिस्तान के chapters हैं. Then there are smaller networking things that happen. आप अगर किसी incubator को जाके देखें तो there are so many such events that they do. Why are they doing it? Because the idea is to connect people, right? And see कि यार कौन किसका कहाँ पे help और support कर सकता है. So this, if the CEO and the business leader is not attending these kind of things and is not going in to actively see how to grow their business, then is that person really doing what needs to be done for that organization and for that business? अगर business नहीं आएगी, आपके revenue streams multiply नहीं करेंगे, चाहे वो एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम को ग्रो करे, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपकी एक बहुत ही क्लियर नीश है कि यार मैं फॉर एग्जांपल जस्ट टू टेक द एयर कंडीशनर राइट हियर, कि इसके अंदर जो है वो जो कंप्रेसर डलता है मैं वो मैन्युफैक्चर करूंगा एंड दैट्स ऑल आई विल डू, राइट? या उसकी जो ग्रिल होती है सिर्फ वो मैन्युफैक्चर करूंगा एंड दैट्स ऑल आई विल डू. सो दैट्स अ नीश दैट दे हैव पिक्ड अप, राइट? बट देन दे नीड टू गो एंड फाइंड multiple brands who need that thing so that they can keep on building their business, right? So for that to happen, क्या वो middle management वाला बंदा कर सकता है और बंदी कर सकती है? No, it's not possible for them because one, they don't have enough experience. Two, they don't have the mindset for it either. उनका जो they don't have the training required, the life skills required. जो आपने उनकी बात की थी कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल के कहते हैं कि आए हम आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाते हैं, राइट? They don't have that experience, those life skills, those life changing moments that they can draw upon, right? So this is so important. So I would say कि trust, try to build that trust, and it's always two ways, right? If the leader does not encourage that conversation and that space to and also that transparency to say कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ और मेरे काम करने से मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं और उनसे आप पे क्या इम्पैक्ट होता है और आप जो कर रहे हैं उनसे मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और मेरी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, then they're also failing at what they need to do, right? So that engagement is critical. That's why the art of conversations. Okay, yes, बिल्कुल true. So last question before we wrap up, कि जो for instance आप you're in the business of training and coaching के, तो anybody जो इस वक्त देख रहे हैं लोग जो ये करना चाहते हैं, whether they have experience or whether they're fresh new अभी वो चाहते हैं and they're inclined towards this kind of, whether they have the talent, बोलना अच्छा आता है, but what do they need to do? Do they need to do some certifications हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं to be better at this? Absolutely. Look, knowledge जो है ना वो that's the most important thing. ठीक है? So learn, right? And आज तो in today's day and age there are so many free online resources, like stuff like Khan's Academy and this and that and whatnot. I mean, that's the only one that came to my mind right now. Yeah, but there are so many, right? जहाँ पे आप management skills or leadership skills or चीजें आप you can at least pick up, right? And you can read, right? So get your hands onto those things. Develop the habit of reading, and read books, read articles, read posts, read anything that you can get your hands on. That's critical. Watch your podcast. Yes, बिल्कुल जरूर देखें. And also dress well. ठीक है, always dress up for the occasion. Suit up if you can. And be positive, keep learning. Eventually मेरे ख्याल में हर जो भी आप किसी भी फील्ड में अगर हैं, if you keep learning and if you have the desire to learn, I'm sure आजकल के ज़माने में कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही मुझे, कोई मुझे सिखा नहीं रहा. ठीक है, आपके पास 10,000 YouTube वीडियोस होंगी, आपको पैसे भी नहीं देने हैं, फ्री में करना है, कुछ भी नहीं करना है. You need to put in that time, you need to put in that effort. और अगर आप पैरेलल भी कुछ करना चाहते हैं, like you were working somewhere and then on the side use यार मैं सर्टिफिकेशन कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, so eventually अगर मैंने 3 साल बाद ये करना है, so you prepare for it, you plan for it, you learn for it, and then you do it. Absolutely. I mean, that's the whole point. Like, and I will say कि learning की journey जो है ना वो कभी भी end नहीं होती.
Okay, so we'll end on your favorite mentor's quote. कोई ऐसी चीज, कोई एक advice जो आपके favorite Or his mentor ने name. दी हो? Secret. Nice try. He's surrounded by spies. I think मेरे लिए जो biggest turning moment था वो मैं आपको बताया, the one where he told me about time. You know, he said कि look, you need to be in control of your time. And I think उसके बाद से मेरे लिए जो the biggest thing that changed was कि I started looking at time as a thing to invest. ठीक है, so you know whenever मैं relatively एक organized आदमी हूँ, ठीक है, so मैं calendarize करता हूँ हर चीज़, for example, ठीक है, so every single thing, even today's this session was calendarized and booked in my calendar कि ये मुझे इतने बजे से इतने बजे तक आना है और ये होगा, ठीक है, and that's how it is, right? So I even you know I book my gym sessions, I book my golf, everything is in my calendar. That does not mean कि you know I you know कि मैं बहुत ही एक regimented जिंदगी गुजारता हूँ. No, there's a lot of space in that calendar that because I like to keep it like that, because I you know I like कि मुझे वो flexibility हो कि मैं अगर मुझे for example, like I'll give you an example from yesterday, time related कि yesterday was Friday, right? Yeah, so my son had his sports day, ठीक है, and he's my younger one, right? So as with most second children, I was like कि इसकी sports day में थोड़ी देर जाऊंगा और फिर golf खेलने चला जाऊंगा, right? And then in the morning he was like, Baba, you know there's going to be a martial arts display and I'm in it, ठीक है, and You have to stay. I was like, dude, it's gonna happen. I will be there and I will stay for that, and you know it doesn't matter. Golf तो मैं कभी भी खेल सकता हूँ. आज मैंने खेल ली सुबह, right? So I immediately cancelled my golf plan. I said, ठीक है, I'm sorry, I've got other commitments, and I you know enjoyed my son's martial arts display and novelty race, ठीक है, and it was fun, right? So I think ये flexibility जो है ना, when you own your time, True, ये ये flexibility जो है ना ये नहीं आ सकती. You otherwise. choose. बात- वही You बात है कि choose. आपके पास choice अच्छा, And और the choice is based on priorities. It's your एक एज आ जाती है, बंदे ये बोलता है यार अब मैं जो है ना I think so. I think you're right, but also I think the choice exists हमेशा. ठीक है, it's basically when somebody says कि बस time नहीं है ना, वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं I don't know how to prioritize. ठीक है, either that or they're saying कि what you're offering me, I have prioritized something else over it. ठीक है, or they're saying कि मेरे पास management skills नहीं है to you know understand कि मेरा time कहाँ खर्च होना चाहिए, right? It's like, are you inner directed or are you other directed? How do you respond to situations? Absolutely, Are you absolutely. मतलब आपको गुस्सा क्यों आता है अपनी वजह से या दूसरों की वजह से? आपको स्ट्रेस क्यों आता है अपने? It's everything is 100%. like that. It's, मतलब 100% same किसी को होता मैसेज तो नहीं कन्वे कर रही होगी है। कि मैं सिर्फ इसलिए गुस्सा करती हूँ. But on, बस समझ जाए। on that note, thank you very much. बहुत मजा आया. Thank you very I much. hope you had fun. Absolutely, it was a delight. And hopefully लोग आपकी we will show your website on the screen as well. People who want to get in touch, जिनके businesses ऐसे हैं जो इनको लगता है कि they need help. So he is one person that I can vouch for कि he knows what he's saying. और इससे पहले भी आधा घंटा हम यही बातें कर रहे थे. So I can definitely say कि you know he's the man. His company, you can check it out. अगर आपको लगता है कि you know they can benefit, you can benefit from them. So definitely go check them out. And with that, we'll say goodbye. Thank you once again. Thank you very you much. so Really much. appreciate Thank it. you. Pleasure was Thank mine. you for watching. This was Unboxing Success.